Hello students. In this session we are going to study a very important and a very easy topic of chapter acid bases and salts. The chapter is neutralization reaction. Till now we have studied about acids and bases, क्या होते हैं acids and bases, and we have also studied about indicators, right? Now the question is, what happens if we mix one acid with a base? When an acid is mixed with a base, then a chemical reaction takes place. दोनों के बीच में chemical reaction होगी and two products will be formed. One is salt and the other is water. Okay. This reaction in which acid reacts with base to form salt and water, this reaction is known as a neutralization reaction. Now the question is, why this reaction is known as neutralization reaction? See, these salts are formed, these are neutral in nature. These can be slightly acidic also, these can be basic in nature also. Okay, but when acid and base react, so what they try to do is they try to cancel out each other's effect. Base acid के effect को cancel करता है, acid base के effect को cancel करता है, जिसकी वजह से generally जो salt form होता है it is neutral in nature. अब सॉल्ट न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या हमारा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. जो भी स्ट्रॉन्ग होगा इट विल ओवर पावर द अदर एंड द सॉल्ट फॉर्म विल बी ऑफ द नेचर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. ओके, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. लेट अस डिस्कस एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम. We have hydrochloric acid and we have sodium hydroxide. Sodium hydroxide is a base and this is an acid. When both these reacts, what happens? Sodium chloride is formed. This sodium chloride is an example of a salt, okay? And water is formed. In this reaction, acid is reacting with the base, and what is happening? Salt and water are produced. So this reaction is known as a neutralization reaction. We can also write this chemical reaction with the help of chemical formulas. Chemical formula for hydrochloric acid is HCl. Sodium hydroxide is NaOH. Now, while writing the chemical formulas, you have to be very, very careful. Wherever I have used capital letters, they should be capital and the smaller ones should be smaller. You cannot write HCl as HC and capital L. It will be incorrect. Okay. So, be very, very careful with the chemical formulas. So, as HCl, yani ki hydrochloric acid, reacts with sodium hydroxide, which is a base. And what happens? Sodium chloride, which is a salt, is formed, and H2O, it is what? It is water. Salt and water are produced. So this reaction is known as a neutralization reaction. Now there are two important characteristics of neutralization reaction. First is it leads to the formation of salt and water, and second is, like for example, we have taken a test tube, and this test tube I am adding HCl, hydrochloric acid, and NaOH, like what we did in the above reaction. Okay. So when the chemical reaction takes place, after that, if you will touch the test tube, you will feel that the test tube has become slightly hot. थोड़ा सा गर्म हो गया है. क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते हैं उनमें इन दोनों प्रोडक्ट्स के साथ साथ विच इज सॉल्ट एंड वाटर, थोड़ी सी हीट भी रिलीज होती है. तो उस हीट की प्रोड्यूस होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है टेस्ट ट्यूब का, और टच करने पर हमें वो हॉट फील होता है. सो इन दिस रिएक्शन हीट इज ऑल्सो रिलीज्ड, एंड द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व्स रिलीजिंग ऑफ हीट, वो रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को हमने स्पेशल नेम दिया है. दीज रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. लाइक आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन ह्यूमन बींग्स. रेस्पिरेशन क्या होता है? यू नो दैट वी हैव टेकन फूड, इट विल गेट डाइजेस्टेड. डाइजेशन के बाद व्हाट हैपन्स? द डाइजेस्टेड फूड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ बॉडी में. तो एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है, रिलीज होती है, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो इसीलिए रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे.